हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट इंटरनेशनल कंप्यूटर साइंस ओलंपियाड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर क्लास 3. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, यूजर कोर प्रोसेसिंग यूनिट. तो आपको सही आंसर देना है. सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर स्टोर्स डेटा परमानेंटली. कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है? दैट इज रैम, सीपीयू, हार्ड डिस्क, मॉनिटर. So the correct answer is that is hard disk is the part of the computer which store the data permanently. What is software? Software क्या होता है? It's a physical part of computer, a set of program or instruction for a computer, a type of printer, a storage device. इसमें software क्या है? So software is a set of program or instruction for a computer. Which of these is a system software? System software क्या होता है? MS Paint, VLC player, Windows operating system, Google Chrome. So the system software is that is Windows operating system. What does RAM stand for? RAM means what? That read access memory, random access memory, rapid access memory, read and memory. ठीक है, तो आपको सही आंसर देना है. RAM means random access memory. Which device is used to take a picture of the document? डॉक्यूमेंट का अगर पिक्चर लेना है तो कौन सा डिवाइस वहां पे यूज होता है? प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, स्पीकर. So the correct answer is that is scanner is used to take a picture of a document. What is the function of an operating system? Operating system का function क्या है? Play games, manage all hardware and software on a computer, print document, browse internet. So the correct answer is the function of operating system is to manage all hardware and software on a computer. Which of these is an example of application software? Application software के कौन से example है? Windows 10, MS Word, Linux, Android OS. So the correct answer is that is MS Word is an example of application software. What does the undo shortcut do? Undo shortcut की क्या करती है? Saved a file, copies text, reverse the last action, paste the text. So the undo shortcut do that reverse the last action. What is the shortcut key for undo? Undo के लिए shortcut key क्या है? Control plus Z, Control plus Y, Control plus U, Control plus X. So the correct answer is Control plus Z is the shortcut key for undo. What is the shortcut key for redo? Redo के लिए shortcut key क्या है? Control plus Z, Control plus R, Control plus Y, Control plus D. तो आपको सही आंसर देना है. So the correct answer is Control plus Y. Which of these is not a storage device? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, मॉनिटर. आपको सही आंसर देना है. So the correct answer is that is monitor is not a storage device. What does GB stand for in computer storage? Computer storage में GB means what? That is gigabyte, gigabyte, gigabox, giant box, giant byte. So the correct answer is gigabyte. How many bits make one byte? एक byte बनाने के लिए कितने bits चाहिए? 4, 16, 2, 8. So the correct answer is that is 8. Which number system does a computer use? Computer कौन सी number system use करती है? Decimal, hexadecimal, binary, octal. So the correct answer is that is binary. What is URL? A computer language, the address of the website, a type of virus, a keyboard shortcut. URL क्या होता है? It's a address of the website. URL is the address of the website and इसका full form क्या है? Uniform Resource Locator. Which of these is a valid email service? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी valid email service है? Google Chrome, Gmail, MS Word, WinZip. ठीक है, so valid email service नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी है? That is Gmail. What is a search engine? Search engine क्या होता है? A computer part, a tool to find information on the internet, a type of printer, a game.
ठीक है, तो सर्च इंजन क्या होता है? इट्स अ टूल टू फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। विच ऑफ दिस इज अ सर्च इंजन? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सर्च इंजन है? ऑप्शंस आर फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम। So the correct answer is Google. Google is the search engine and remaining are the social media platform. What does ISP stand for? Internet Service Provider, Internet System Program, Internal Service Point, Internet Speed Provider. So ISP stand for, that is Internet Service Provider. What is a LAN? LAN क्या है? Large Area Network, Local Area Network, Light Area Network, Long Area Network. So LAN is nothing but the local area network. What is the main difference between RAM and ROM? RAM and ROM में main difference क्या है? RAM is permanent, ROM is temporary. RAM is temporary, ROM is permanent. Both are temporary, both are permanent. So the correct answer is, that is RAM is temporary, ROM is permanent. Which key combination is used to select all? अगर हमें select करना है so all document तो हम key combination कौन सी use करते हैं? Control plus S, Control plus Z, Control plus A, Control plus X. So Control plus A is used to select all. What is the shortcut to print a document? अगर हमें डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो हम कौन सा शॉर्टकट यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस क्यू, कंट्रोल प्लस डी. सो द करेक्ट आंसर इज कंट्रोल प्लस पी. व्हाट इज द स्प्रेडशीट प्रोग्राम? स्प्रेडशीट प्रोग्राम क्या होता है? दैट इज एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस पेंट. सो द करेक्ट आंसर इज एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम. विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज फॉर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज होता है? .xls, .ppt, .docx, .txt. So the correct answer is .docx. Which file extension is used for MS Excel file? .docx, .xlcx, .pptx, .pdf. So the correct answer is .xlsx is the shortcut key or the extension is used in MS Excel file. What is motherboard? Motherboard क्या होता है? A type of keyboard, a main circuit board connecting all the computer parts, a storage device, a display device. So motherboard is nothing but the main circuit board connecting all computer parts. एक सर्किट बोर्ड होता है जहाँ पे कंप्यूटर के हर एक पार्ट वहां पे कनेक्ट होते हैं. What does the router do? राउटर क्या करता है? Prints document, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है. कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क एंड डायरेक्ट इंटरनेट ट्रैफिक, मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करता है और इंटरनेट ट्रैफिक डायरेक्ट करता है. स्टोर्स डेटा, डेटा को स्टोर करता है. स्कैन्स इमेजेस, इमेजेस को स्कैन करता है. So router do connect multiple network and direct internet traffic. Which of these is a type of computer virus? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कंप्यूटर वायरस का कौन सा टाइप है? फायरवॉल, एंटीवायरस, ट्रोजन हॉर्स, ब्राउजर. तो आपको सही आंसर देना है. सो द करेक्ट आंसर इज ट्रोजन हॉर्स. व्हाट इज साइबर सेफ्टी? साइबर सेफ्टी क्या है? प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन, स्टेइंग सेफ व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट, मेकिंग वीडियोस, डाउनलोडिंग एप्स. सो साइबर सेफ्टी इज नथिंग बट द staying safe while using the internet. What does the firewall do? Creates fire, blocks unauthorized access to a network, speed up internet, stored password. Firewall क्या करता है? Firewall block करता है unauthorized access to a network. What is the full form of HTML? HTML का full form क्या है? Hypertext Markup Language, High Transfer Markup Language, Hyper Transfer Media Language, Home Text Markup Language. So full form of HTML is, that is Hypertext Markup Language. What is the browser used to for? Browser किस लिए use होता है? Editing photos, accessing website on the internet, making spreadsheet, playing offline games. Browser किस लिए use होता है? That accessing website on the internet. Which of these is not a web browser? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Excel, Microsoft Edge.
नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? सो दैट इज MS Excel इज नॉट अ वेब ब्राउजर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F1 की? F1 की का फंक्शन क्या है? सेव फाइल, ओपन हेल्प, कॉपी टेक्स्ट, रिफ्रेश पेज। So function of F1 key is to open help. What does pressing F5 usually do in a browser? F5 जो की होती है उसका यूज क्या है? Open a new tab, print the page, refresh and reload the page, close the browser. आपको सोचना और सही आंसर देना है. So the correct answer is that is refresh and reload the page. What is Bluetooth used for? Bluetooth किस लिए यूज होता है? Storing data, data स्टोर करने के लिए, printing document, document print करने के लिए, connecting to internet, internet को connect करने के लिए, wireless short range communication between devices. So Bluetooth is used for wireless short range communication between devices. What is Wi-Fi? A type of virus, wireless internet connection technology, a file format, a keyboard shortcut. So Wi-Fi क्या होता है? Wireless internet connection technology. What is the purpose of recycle bin? Recycle bin का purpose क्या है? Store important file को store करना, temporary store deleted file, then download files and save password. So what is the purpose of recycle bin? That is temporary store deleted file. Deleted file जो होती है वो वहाँ पे temporary stored होती है. What does Control plus F do? Control plus F क्या करता है? Find and search the text in a document. Document में जो text है उसे find and search करता है. Format text, text को format करता है. Open file, file को open करता है. Full screen. So the answer is Control plus F do find and search text in a document. What is cursor? Cursor क्या है? A type of key, the blinking pointer on screen controlled by mouse, computer program, a storage device. So cursor is the blinking pointer on screen controlled by mouse. What is the function of escape key? Escape key का function क्या है? Save the file, types capital letters, cancel or exit the current operation, open a folder. Escape key का function क्या है? That is cancel or exit the current operation. What does copy and paste means? Copy and paste means क्या होता है? Delete and move text, duplicate content and place it elsewhere, print content, save content. Okay, so copy and paste means क्या होता है? That is duplicate content and place it elsewhere. मतलब दूसरी जगह पे जैसे कि वैसे कंटेंट बनाना. Which of these is an input device? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रोजेक्टर, स्पीकर, वेबकैम, मॉनिटर. So the correct answer is that is webcam is an input device, remaining all the output device. What is pixel? Pixel क्या है? A computer program, a smallest unit of a digital image on a screen, a type of virus, a keyboard key. So pixel क्या है? Is the smallest unit of a digital image on a screen. What is MS PowerPoint used for? MS PowerPoint किस लिए यूज होता है? एडिटिंग फोटोज एडिट करने के लिए, क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन विद स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन करने के लिए, राइटिंग ईमेल्स, ईमेल राइटिंग करने के लिए, स्टोरिंग डेटा स्टोर करने के लिए. So MS PowerPoint is used for creating presentation with slides. What does Control plus B do in MS Word? Control plus B क्या करता है MS Word में? Make text italic, text को italic करता है. Make text bold, underline and change font color. So Control plus B do that is makes the text bold. What does Control plus I do in MS Word? Control plus I क्या करता है MS Word में? Make text bold, increase font size, make text italic, insert an image. So Control plus I do that is makes text italic. What is cloud storage? Cloud storage क्या है? Storing data in the sky, sky में data store करना, storing data on internet server access from anywhere, a type of RAM, a USB storage device. Cloud storage क्या है? That is storing data on internet server access from elsewhere or anywhere. It means इंटरनेट सर्वर पे डेटा स्टोर करना जो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं.
इस तरह से हमने ये वीडियो कंप्लीट किया है। तो हमने यहाँ पे हर एक कोशिश की है कि आपका हर एक टॉपिक यहाँ पे अच्छे से कवर हो सके। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।